عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على तकरीमती इल्ला बिइज़्निह। सैयदना अबू मसऊद अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमात की इमामत वो शख्स करे जो उनमें सबसे ज़्यादा किताबुल्लाह का पढ़ने वाला हो, और अगर उसमें सब यकसा हो तो फिर वो आदमी इमामत करे जो सुन्नत और शरीयत का ज़्यादा इल्म रखता हो। अगर उसमें भी सब बराबर हो तो वो जिसने पहले हिजरत की हो, और अगर हिजरत में भी सब बराबर हो तो फिर वो शख्स इमामत करे जो सिन के लिहाज से मुक़द्दम हो, और कोई आदमी दूसरे आदमी के हल्क़ा सियादत और हुकूमत में उसका इमाम न बने, और उसके घर में उसके बैठने की ख़ास जगह पर उसकी इजाज़त के बगैर न बैठे। So today inshallah we're going to start a new chapter about who should become an imam, the relationship of Aimma and those who are following. This hadith of Sayyidina Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, where he has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that imam should be that person. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has told that who should be preferred, given precedence for imamat. The first word is aqra'uhum li kitabillah. Aqra or qari literally means somebody who reads. aqra qari का मतलब ये होता है कि जो पढ़ने वाला हो, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में क़ारी उस शख्स को कहा जाता था जो कुरान शरीफ पर अमल करने वाला हो। क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत है जिसमें हज़रत आयशा ने देखा एक शख्स बड़ा हल्के हल्के चल रहा है, तो हज़रत ने पूछा कि ये क्यों इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो रिवायत के अल्फाज ये कि ऐसे चल रहा है कि जैसे बस अब मर के गिरने वाला है। तो वो गुरूर से ऐसा कर रहा था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया गया कि ये क़ारी है। तो मुराद ये थी कि बड़ा कुरान शरीफ का जानने वाला है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे बड़े क़ारी थे। तो अंदाज़ा लाई कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस शख्स की क़िराअत यानी कुरान शरीफ कैसा पढ़ता है वो सुना तो नहीं, ज़ाहिर उसको पहचानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रही कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे बड़े क़ारी थे। तो इस बात की दलील है कि क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी होने की वजह से इल्म कुरान में बड़े थे, इसलिए हज़रत ने फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे बड़े क़ारी थे, लेकिन वो इससे तेज़ चला करते थे। सो क़ारी और अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, the meaning is that the one who has a relationship with the Quran in terms of following the Quran. It does not mean that Hafiz Sahib is always going to become the Imam because he knows the Quran, he has learned it by heart, or a person who is well versed or master in the delicacies of the qira'at, the rules, principles. Qari means that person who has a very close relationship with the Quran in terms of following it. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. So the narration that I quoted, Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha, she once saw a person who was walking very slowly, as if they would drop dead. She asked, why is this person walking so slowly? Which the meaning was that why is this person walking so arrogantly? So she was told that this person is a qari. So she said that Umar radiallahu anh was a bigger qari than him, and she had not seen this person, or she had not known this person, she had not heard how he used to recite, how beautifully he would recite the Quran, but she knew that in terms of knowledge of the Quran, Sayyidina Umar Khattab radiallahu anh was surely better because he was much closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So she said that Umar radiallahu anh was a much bigger qari, but he did not walk this way, he walked faster. So this tells us that qari literally means somebody who reads the Quran, but the meaning is who has a relationship with the Quran in terms of following it. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. If all of them, if all of the people present, they are similar or equal
in the knowledge of Quran. فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Then among those who have a relationship with the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a better relationship with the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in terms of knowing and following it. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. If they are all equal in that as well, then those who did hijrah first, hijrat or migration first. So this is about a community of the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, and whoever did migration first, then they have a precedence if all of them are equal in the understanding of Quran and in the understanding of the Sunnah, following of the Sunnah. Then the standard of superiority or having a better deeni status in terms of deen, it was whoever did hijrah or migrated first. And if all of them are the same, equal in terms of hijrat or migration as well, then the one who is older, and that is also understood that an older person always has more respect if in other regards all of them are equal. So this is about a community. This applies to a community where people know each other, and the Sahaba, the community of the Sahaba was such that there were people that it was hard to determine who is a bigger qari, who has the more knowledge and more practice of Quran, who has the more knowledge or more practice of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So these cases applied there. So especially in this, even today, if this happens, that there is a community where there is all mashallah pious people, very good following, practicing Muslims, good knowledge of the Quran, understanding of the Quran, good understanding of the Hadith and Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then today as well the precedence will be given to the person who is older. And then in the same regard, the last two sentences of the Hadith, وَلَا يُؤَمَّنُ الرَّجُلُ الرَّجَلْ فِي السُّلْطَانِ. Nobody lead the prayer in the area of someone else's leadership. And this is why we see that our mashayikh, even our teachers, if they would visit sometimes the place of where their students would lead salah, they would not go forth themselves unless they are asked about it, that you Hazrat, you lead the salah. They will not go themselves, although everybody understands and knows that they are higher in all those things. They are actually the teacher of the imam, the person who is leading the salah, but unless asked, so they will not go. Dr. Abdul Hasan Arifi rahimahullah, उनकी मजलिस के बाद नमाज में इमामन जो है वो हमें हज़रत जो बड़े शेख हैं हाफिज़ अब्रारुल हक कल्याणवी वो फरमाया करते थे, बल्कि उनको कहा भी इमाम साहब जाता था, ही वाज कॉल्ड इमाम साहब. तो एक दफ़ा हज़रत शाह मोहम्मद अहमद साहब जो खलीफा हैं हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना शरीफ साहब थानवी रहमतुल्लाह के, वो तशरीफ़ लाए हुए थे, मेहमान थे. तो हज़रत डॉक्टर साहब के दिल में ये आया कि इमामत इनसे करवानी चाहिए, लेकिन क्योंकि इमाम हज़रत हाफिज़ अब्रारुल हक साहब हमारे बड़े शेख हुआ करते थे, तो हज़रत ने ख़ुद लिखा है हाफिज़ साहब ने कि हज़रत मुझे कोने में ले गए और चुपके से मुझसे कहा कि देखिए आज शाह मोहम्मद अहमद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप इनसे दरख्वास्त करें कि ये इमामत करें. तो ज़रा सी बातों का भी ध्यान रखना. माशाअल्लाह हमारे मशाइख़ अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे कि ना ये कि हालांकि खानक़ाह उनकी हज़रत का मकान, जो साहिब मकान है उसी का हक़ होता है इमामत करना या इमामत के लिए कहना किसी को, लेकिन हज़रत ने क्योंकि एक रिवाज था कि हाफिज़ साहब इमामत फरमाया करते थे, तो उन्हीं से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इनसे दरख्वास्त करें कि ये इमामत करें, और ऐसा ही हुआ. सो नोबडी लीड सलाह in the circle of someone else. Dr. Hasan Arifi rahimahullah, in his day, when his majlis would happen, then after his majlis, our grand Shaykh Hazrat Hafiz Abrarul Haq Kalyanwi, he would lead the salah. Generally he was called the Imam Sahib as well. So one day Shah Muhammad Ahmad Sahib, who was a Khalifa of Hakimul Ummad Maulana Sharif Sahib Thanvi rahimahullah, he was visiting. So Dr. Sahib took Hafiz Sahib to one side and asked him that it is my preference, it is my wish that you request Shah Muhammad Ahmad Sahib that he leads the salah.
So he took care of this, that even though it is his house and even though he has the right to determine who's going to lead the salah, because the norm was that Hafiz Sahab he would usually ask Hafiz Sahab rahimahullah to lead the salah, he asked Hafiz Sahab to go and ask Shah Muhammad Ahmad. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding and realization and make us worthy of our mashayikh, at least try to do so. Ameen ya Rabbal Alameen. وَلَا يَقْعَدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. And in the house of a person, nobody sit in a person's special place without their permission. So it includes the bed of that person, or sometimes one example that comes to mind is that at the table there is seats dedicated for every person generally in the house. So if a person is visiting from outside, they should make sure that they are not sitting at the place of someone else that is dedicated unless they are asked. Generally the leader of the house, the leader of they sit at the head of the table, so the guest should not run and sit at the head of the table, but wait for the permission of wherever they are being asked to sit. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जो अच्छे और बेहतर हों उनको अपना इमाम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे रब और तुम्हारे मालिक के हुजूर में वो तुम्हारे नुमाइंदे होते हैं. Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu anhu has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that those who are better among you, make them your a'immah, because they are your representatives before Allah subhanahu wa ta'ala. So again, who's better? That explanation has been given, that they are much more practicing of the Sharia of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Quran and the Sunnah. And in detail Hazrat has written कि असल में इमामत जो है वो ये बहुत ज़िम्मेदारी की बात है कि इमाम जो है वो पूरी जमात का नुमाइंदा है अल्लाह ताला के सामने. तो अगर इमाम की जमात अच्छी, इमाम की इमामत, इमाम की शख्सियत अच्छी होगी तो पूरी जमात की का सवाब, उसकी मकबूलियत वो बढ़ जाएगी. अल्लाह ताला महफूज़ फरमाए, अगर इमाम अच्छी नुमाइंदगी ना करे तो उसकी बड़ी पकड़ है. अल्लाह ताला महफूज़ फरमा ले. और यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद इमामत फरमाया करते थे, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर नुमाइंदा इस उम्मत का अल्लाह ताला के सामने कोई नहीं हो सकता. अल्लाह अकबर. और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद दिन क़ब्ल जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमामत करना मुश्किल हो गया तो आपने ख़ुद हुक्म देकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह अपने मुसल्ले पे खड़ा किया. और ये बात सहाबा में बिल्कुल मुत्तफ़िक़ थे इस बात पे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अजल्ला, जो सहाबा में सबसे अजल्ला है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं. उलूम क़ुरान में, सुन्नत की इत्तिबा में, शरीयत की समझ में, फ़िक़ह में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत फरमाने में, सब चीज़ों में सबसे बढ़कर इस उम्मत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं. और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को इमामत के लिए मुंतख़ब फरमाया और एक तरह से गोया उम्मत के लिए अपने वारिस का या अपने सक्सेसर का इंतज़ाम फरमा दिया, ऐलान फरमा दिया. और जितने भी अइम्मा उसके बाद आ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, वो सब इस ज़िम्मेदारी के साथ खड़े हो रहे हैं कि वो जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का हक़ अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो मुसल्ला है जहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे. और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़ा किया. तो अब जो भी इमाम बन रहा है ये बड़ी ज़िम्मेदारी की चीज़ है, बड़ी हसास बात है. इसमें दौड़ के आगे नहीं कूदना चाहिए कि अब मैं इमाम बन जाऊँ, मैं इमाम बन जाऊँ, मुझे मौका मिल जाए. अल्लाह ताला महफूज़ फरमाए, जो लोग अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं वो तो पीछे हटने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ से बच जाएँ, किसी तरह इस ज़िम्मेदारी से बच जाए. हाँ, जब ज़िम्मेदारी पड़ जाए, जब ज़िम्मेदारी डाली जाए किसी बड़े की तरफ से, तो फिर पीछे भी नहीं हटना चाहिए और
अल्लाह ताला से डरते हुए, दुआ मांगते हुए फिर इस ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his whole life, because the Imam is the representative of people before Allah subhanahu wa ta'ala, all his life the Prophet sallallahu alaihi wasallam led the salah himself, because there could be no representative other than the Prophet sallallahu alaihi wasallam for this ummah. And then before he was about to pass away, a few days back, he made Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anh a representative of people before Allah subhanahu wa ta'ala by asking him to stand in his place and lead the salah. So therefore, whoever is becoming an imam, then they have a lot of responsibility on their shoulders, and they have to come with the sense that they are going to stand where the Prophet ﷺ used to stand, and they are going to represent people before Allah subhanahu wa ta'ala. So it's a major responsibility placed on the shoulders of imam. It is not something that one should run after, but if that responsibility is placed on the shoulders, then we should not also shy away from it. But if the responsibility is placed, then if there is someone else better, then we should suggest their name. But if the responsibility is placed, then we should take that responsibility, and with a lot of fear and asking Allah subhanahu wa ta'ala, we should fulfill that responsibility. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمنه وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وما كان من نقص فهو عليه. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जमात की इमामत करे उसको चाहिए कि खुदा से डरे और यकीन रखे कि वो मुक्तदियों की नमाज का भी ज़ामिन यानी ज़िम्मेदार है, और उससे इस ज़िम्मेदारी के बारे में भी सवाल होगा. अगर उसने अच्छी नमाज़ पढ़ाई तो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले सब मुक्तदियों के मजमूई सवाब के बराबर उसको सवाब मिलेगा, बग़ैर इसके कि मुक्तदियों के सवाब में कोई कमी की जाए, और नमाज में जो नक़्स और क़सूर रहा होगा उसका बोझ तन्हा इमाम पर होगा. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever leads the salah in Jama'at, then they should fear Allah and bear it in mind that they are responsible for the prayer of those following them, and they will be asked about this responsibility. If they lead a nice salah, then those who are praying behind them, he will get a reward equal to the collective reward of all those following him. Without it, that the reward of the followers is decreased. And if there is any defects and shortcomings in salah, the burden will be on the imam alone. Allahumma afina wa afu anna. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई लोगों का इमाम बनकर नमाज़ पढ़ाए तो चाहिए कि हल्की नमाज़ पढ़ाए, यानी ज़्यादा तूल ना दे, क्योंकि मुक्तदियों में बीमार भी होते हैं और कमज़ोर भी और बूढ़े भी. और जब तुम में से किसी को बस अपनी नमाज़ अकेले पढ़नी हो तो जितनी चाहे लंबी करे. Narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when one of you has become an imam and is leading the salah, then they should keep it light, should not make it long, because in the followers there might be sick people, and there might be weak people, and there might be old people. And when one of you is praying alone, then they can make it longer as they wish. عن قيس بن أبي حازم قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس
فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ. क़ैस इब्न हाज़िम से रिवायत है कि मुझसे अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बखुदा में फ़लाँ शख्स की वजह से सुबह की नमाज में शरीक नहीं होता क्योंकि वो बहुत तवील नमाज़ पढ़ाते हैं। हदीस के रावी अबू मसूद अंसारी बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में खुतबा दिया और मैंने कभी आपको वाज़ और खुतबे की हालत में इस दिन से ज़्यादा ग़ज़बनाक नहीं देखा। फिर इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बाज़ वो लोग हैं जो अपने गलत तर्ज़ अमल से अल्लाह के बंदों को दूर भगाने वाले हैं। जो कोई तुम में से लोगों का इमाम बने और उनको नमाज़ पढ़ाए तो उसके लिए लाजिम है कि मुख्तसर नमाज़ पढ़ाए, क्योंकि उनमें ज़ईफ़ भी होते हैं और बूढ़े भी और हाजत वाले भी। This is a hadith. Abu Masud Ansari radiallahu anhu has said that a person came to the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that, Ya Rasulullah, I am not able to join Fajr Salah because of such and such people, such and such person, because he leads a very long Salah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Masud Ansari radiallahu anhu says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave a speech, and we had not seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam more angry than that day. And he said that there's people among you who, because of their wrongdoings, the wrong way, push people away from Allah subhanahu wa ta'ala. So whoever becomes an imam and leads people in salah, then they should make it short, because there is weak people and there is old people and there is people with needs among the followers. और इसी किस्म का एक वाक़या मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है कि वो भी ज़ाहिर है कि सहाबा का एक ज़ौक़ था कुरान शरीफ पढ़ने का और इमामत, ज़ाहिर है नमाज में जब खड़े हों तो कुरान शरीफ तवील पढ़ने का। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी एक दिन वो इशा की नमाज़ में सूरह बकरा शुरू करी। अल्लाह, तो एक साहब बेचारे जो बहुत थके हारे थे, उन्होंने नमाज़ तोड़ी और फिर अपनी अलग नमाज़ पढ़ी। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर मिली तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला के डांटा और फरमाया कि अफ़त्तान अंत या मुआज़, तुम लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो। और फिर ये बताया कि छोटी सूरतें पढ़ा करो, वश्शम्सी वद्दुहाहा पढ़ा करो, वल्लैलि इज़ा यग़शा पढ़ा करो, वद्दुहा पढ़ा करो, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ा करो। This kind of a similar story is narrated of Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, that one night he started Surah Baqarah and Isha. So a person broke his salah and prayed separately. And then when the Prophet ﷺ learned of it, he called Sayyidina Mu'adh and reprimanded him that you are going to put people in trouble. And he told him that what surah should he recite? وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالضُّحَى and سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, the kind of these surah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding. Ameen ya Rabbal Alameen. नाज शरीफ के चंद अशार सुना रहा हूँ। ये 5-6 महीने पहले मैंने ये अशार हुए थे। जब ख़ास तौर से वो कोरोना वायरस के उसमें बाबुस्सलाम वगैरह भी बिल्कुल बंद हो गया था और उम्मत का एक तरह से बिल्कुल ज़ाहिरी जो ताल्लुक़ है आम उम्मती का वो कट ही गया था। तो उस वक्त चंद अशार कहे थे, मतलब मुख्तलिफ़ वक्तों में हुए अशार ये। उस वक्त भी एक शेर कहा था और अभी पिछले हफ्ते उसका वो जो शेर मैंने कह के छोड़ दी थी फिर नात, तो उसका जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह अता हुआ। तो जिस मुहतमिम में शान तरीक़े से अता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वही इंशाअल्लाह आज नात का आखिरी शेर पढ़ना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का दम भरने वाला बनाए। Because my people who understand English only, they have
they have asked that these ashar should be explained in English at least. So inshallah I'll try my best to explain those in English one by one as well. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. ज़मीं पर है अब भी मकी अर्श वाले, वो लोगों में बहरे खुदा रहने वाले. ज़मीं पर है अब भी मकी अर्श वाले, वो लोगों में बहरे खुदा रहने वाले. ज़मीं जिनके दम से बुलंद अज़ समा है, ज़मीं जिनके दम से बुलंद अज़ समा है, ये होशो खिरद से हैं बाला की बातें. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was given a choice that would he prefer to stay in this earth or go to Allah subhanahu wa ta'ala in the skies like the other Anbiya are. The Prophet sallallahu alaihi wasallam chose to stay in this world among his ummah sallallahu alaihi wasallam. And because of this, this earth and the part that touches the body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is more superior. It is higher in status than even the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala does not have a physical shape or form. The Prophet sallallahu alaihi wasallam's physical body is actually touching the ground. ज़मीं जिनके दम से बुलंद अज़ समा है, ये होशो खिरद से हैं बाला की बातें. सरे अर्श रुतबा बुलंद उनका पाया, निगाहें झुकाए जिन्हें चलते देखा. सरे अर्श रुतबा बुलंद उनका पाया, निगाहें झुकाए जिन्हें चलते देखा. ज़मीं से फ़लक तक, फ़लक से भी आगे, ज़मीं से फ़लक तक, फ़लक से भी आगे, है उन्हीं का चर्चा, है उन्हीं की बातें. सरे अर्श रुतबा बुलंद उनका पाया, निगाहें झुकाए जिन्हें चलते देखा. ज़मीं से फ़लक तक, फ़लक से भी आगे, है उन्हीं का चर्चा, है उन्हीं की बातें. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was troubled a lot on this place, on this earth. And his humble, noble habit was that he would always keep his gaze lowered. When he would walk, he would be looking towards the ground. Such a humble person, such a person of grand, noble characters. Allah, but what was his respect that these people were troubling him on the earth, and Allah subhanahu wa ta'ala lifted him up and made him travel the skies and made him to see the Jannah and his status on the skies. That all the angels, all those Anbiya, they were willing, they were waiting, they were anticipating anxiously for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to come, so that they could lay their eyes on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, actually see the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Such a grand, such a noble status. फलक ज़मीं से फ़लक तक, फ़लक से भी आगे, है उन्हीं का चर्चा, है उन्हीं की बातें. Even beyond the skies, the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually met Allah subhanahu wa ta'ala that night. So even beyond the skies, ज़मीं से फ़लक तक, फ़लक से भी आगे, है उन्हीं का चर्चा, है उन्हीं की बातें. फ़लक झुक के चूमे, ज़मीं है वो ऐसी, मदीने में हस्ती मकी है वो ऐसी. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मुहम्मद. फ़लक झुक के चूमे, ज़मीं है वो ऐसी, मदीने में हस्ती मकी है वो ऐसी. खुदा जिनकी चाहत को खुद चाहता है, खुदा जिनकी चाहत को खुद चाहता है, जो कह दें वो हैं बस खुदा ही की बातें. खुदा जिनकी चाहत को खुद चाहता है, जो कह दें वो हैं बस खुदा ही की बातें. So it is as if the sky bows down and kisses the ground of Medina, because the Prophet ﷺ is resting there. And he is that person, that one person whose wish is the wish of Allah subhanahu wa ta'ala. Several places in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala said, we read وَالضُّحَى, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah will give you such that will please you. Sallallahu alayhi wa sallam. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. We changed the qibla in a direction that you wished, that you preferred. Allah, जो कह दें वो हैं बस खुदा ही की बातें, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा. Whatever the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, it is a wahi from Allah subhanahu wa ta'ala. मेरे नाम अबर लेके जाते तो होंगे, दुरूदों के हदिये सुनाते तो होंगे.
मेरे नाम अबर लेके जाते तो होंगे, दुरूदों के हदिये सुनाते तो होंगे, मगर आरज़ू है कि दर पे भी जाऊं, मगर आरज़ू है कि दर पे भी जाऊं, करूं रूबरू उनसे दिल की मैं बातें, मगर आरज़ू है कि दर पे भी जाऊं, करूं रूबरू उनसे दिल की मैं बातें. So there is angels appointed. The Prophet ﷺ has told us that take our durood and present them to the Prophet ﷺ in his grave, and the Prophet ﷺ listens to them. So that is a fact, that whoever says durood, it is accepted and it is taken into the service of the Prophet ﷺ. But as an ummati, it is also my wish that I actually physically go to his doorstep ﷺ, and I present my heart's condition before the Prophet ﷺ. हाजी साहब अल्लाह हाजिर मक्की का शेर है कि काहे तुझबिन मैं कहूँ तुझसे, काहे को तुझबिन मैं कहूँ किससे, यही हाल दिली, सैयदी अंता हबीबी व तबीब क़ल्बी. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र की ज़िंदगी में भी उनके अनवार, उनकी उम्मत पे शफ़क़त, उनकी उम्मत के लिए दुआएं, वो सब जारी हैं. तेरे सब्ज़ गुंबद के साये में आकर, तेरी जालियों से मैं चेहरा मिलाकर, तेरे सब्ज़ गुंबद के साये में आकर, तेरी जालियों से मैं चेहरा मिलाकर, करूं अर्ज़ गम की कहानी मैं अपनी, करूं अर्ज़ गम की कहानी मैं अपनी, मेरे अश्क कह दें मेरे दिल की बातें. This is the same wish that we actually reach the Prophet ﷺ physically and are able to speak with him. Now this is the share that this is the last. This was the last one that I said that time, where the pictures were going around. Umrah was, prohibited. Nobody could go to Medina from outside. Nobody could go to Makkah from outside, and Bab al-Salam was closed. It's that door which never closes on the Ummah, the Prophet ﷺ, that door through which the Ummati, the common people, go and say salam to the Prophet ﷺ, but that door was also closed because of the pandemic. So this is that came at that time. Allah, ऐ शम्मे फिरोज़ां ये दूरी तुम्हारी, दिले आशिक़ां पे है कितनी ये भारी, ऐ शम्मे फिरोज़ां ये दूरी तुम्हारी, दिले आशिक़ां पे है कितनी ये भारी, उधर एक वो दर के मुक़फ़्फ़ल हुआ है, उधर एक वो दर के मुक़फ़्फ़ल हुआ है, इधर सारे जग में अदावत की बातें, उधर एक वो दर के मुक़फ़्फ़ल हुआ है, इधर सारे जग में हैं ज़ुल्मत की बातें. So it is in the Prophet ﷺ, who is a ever bright light. Even if he has passed away, his anwar, they are continuing, sallallahu alaihi wasallam, and through that the whole world is finding light, because the anwar of Haramain, it is understood, it is accepted that the tajalliyat, the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala, they descend on Haramain Sharifain and then they are distributed to the whole world. So this distance with the Prophet sallallahu alaihi wasallam is very hard, very heavy on the hearts of those who love him. That door is closed, and the whole wide world we have animosity from people, and we have darkness spreading. So the answer of this I got last week. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'll read in continuation and you'll understand. मेरा जी चाहता है कि मैं खड़े होकर पढ़ूँ ये शेर, लेकिन बहरहाल ज़ब्त का कुछ तो ख़ासा है. ऐ शम्मे फिरोज़ां ये दूरी तुम्हारी, दिले आशिक़ां पे है कितनी ये भारी, उधर एक वो दर के मुक़फ़्फ़ल हुआ है, इधर सारे जग में है ज़ुल्मत की बातें, मगर मोतबर जिनकी चाहत है हमसे, मगर मोतबर जिनकी चाहत है हमसे, अदा जिनकी हर एक इबारत है हमसे, मगर मोतबर जिनकी चाहत है हमसे,
अदा जिनकी हर एक इबारत है हमसे, हमारे करीने में होते हैं हरदम, हमारे करीने में होते हैं हरदम, नहीं उनकी दूरी में फ़ुरक़त की बातें, हमारे करीने में होते हैं हरदम, नहीं उनकी दूरी में फ़ुरक़त की बातें. So those who have a real love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a credible love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sign of which is that they follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he was leaving the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had sent him, he was seeing him off, sending him as a governor to lead the people of Yemen. So the last thing the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him that, "O Mu'adh, maybe next year you will not find me here. So when you come back, you will pass me on my grave. I'll be in my grave." Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he started crying. So it comes in hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam turned his face towards Medina, turned his face away from him and looked towards Medina and said that, "Inna awla an-nasi bi muttaqun al-muttaqun." Those people who have taqwa, they are always close to me. They are always close to me, the closest to me. And what is taqwa? Taqwa is in the heart, but it is expressed through the obedience of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the love becomes credible. We claim you'll find so many people who will claim the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam, but there's very few people who will actually show their love. Their love would be visible because they are in the tiniest of things, even the smallest of things. They are following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is the only standard of love. All the other standards of love, all the other claims, they are baseless. They have no value. So मगर मुर्तबर जिनकी चाहत है हमसे, अदा जिनकी हर एक इबारत है हमसे, हमारे करीने में होते हैं हरदम, they are close to us all the time, नहीं उनकी दूरी में फ़ुरक़त की बातें, their distance does not mean separation. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. This zameen is of a Khalifa of Hakim Akhtar rahimahullah. It's either Hakim Sahib himself or a Khalifa of him, or the Taib Sahib. And this suited me a lot. I have said many, ash'ar in this, but now inshallah I'll not say any more in this zameen. Present a few more inshallah ash'ar and then we'll proceed towards dua and dinner. So these ash'ar are about one's relationship and their longing for Allah subhanahu wa ta'ala in this world. And our connection with Allah subhanahu wa ta'ala in this world is through our heart. That we do muraqbah, we think about Allah subhanahu wa ta'ala, we are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and we work on that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. In the Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala has promised that we will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. कौन पल के सरे राह बिछाकर, अपने सर को अदब से झुकाकर, कौन पल के सरे राह बिछाकर, अपने सर को अदब से झुकाकर, सारी दुनिया से नज़रें चुराकर, सारी दुनिया से नज़रें चुराकर, तुमको बैठा है दिल में बसा कर. So who is it? A person is talking to himself that who was I and what am I doing? That I am sitting with my eyes lowered and I have forgot about the whole world and I am thinking about, I am sitting and I have Allah in my heart. I have Allah in my heart. Such a high thing, such a high honor being granted to such a person, of a valueless person.
कौन पल के सरे राह बिछा कर अपने सर को अदब से झुका कर सारी दुनिया से नज़रें चुरा कर तुमको बैठा है दिल में बसा कर. The next one is about ज़िक्र जहरी. हर नफस चोट दिल पर लगा कर नाम से तेरे दुनिया जगा कर. हर नफस चोट दिल पर लगा कर नाम से तेरे दुनिया जगा कर. कौन मजनू बना और कैसे, कौन मजनू बना और कैसे, किसको पास बिठाया बुला कर. हर नफस चोट दिल पे लगा कर नाम से तेरे दुनिया जगा कर. कौन मजनू बना और कैसे, किसको पास बिठाया बुला कर. So the Prophet ﷺ has said that remember Allah subhanahu wa ta'ala and such excessively that people start calling you a crazy person. So how does a person become crazy in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala? Allah does it to him. Allah makes him crazy in his love. And in the hadith of the Prophet ﷺ that a person who is remembering Allah subhanahu wa ta'ala, it is as if they are sitting with Allah subhanahu wa ta'ala. So that majnu who's valueless, it is remembering Allah subhanahu wa ta'ala and Allah has called him and made him to sit with him, with Allah subhanahu wa ta'ala. कौन मजनू बना और कैसे, किसको पास बिठाया बुला कर. और सारी दुनिया नज़र से गिरा कर एक आलम खुद अपना बसा कर. सारी दुनिया नज़र से गिरा कर एक आलम खुद अपना बसा कर. किसको रास आ गई बेखुदी ये, किसको रास आ गई बेखुदी ये, जी सकेगा ना अब होश पाकर. किसको रास आ गई बेखुदी ये, जी सकेगा ना अब होश पाकर. A person who has fallen in the love of Allah subhanahu wa ta'ala, this world becomes valueless for them, and the things of respect of this world becomes, they lose their respect, they lose their value. It's not that they stop doing everything, but it's that the value from the heart is gone, has vanished. And who is that person who has become so adapted to this lifestyle that they cannot even live without it? And they have lost their mind in a way, but that is the only way that they can survive. There is no way that they can come back. किसको रास आ गई बेखुदी ये, जी सकेगा ना अब होश पाकर. क्या करे दिल यहाँ जी लगा कर, आबो गिल के सनम कुछ बना कर. क्या करे दिल यहाँ जी लगा कर, आबो गिल के सनम कुछ बना कर. रोज़ो शब जब पुकारे है मंजिल, रोज़ो शब जब पुकारे है मंजिल, पास आकर सनम गर दिखा कर. रोज़ो शब जब पुकारे है मंजिल, पास आकर सनम गर दिखा कर. So what is this world, and why would our heart engage with it when everything that it contains is basically earth and water? All the idols that we have made, they are basically what? Our businesses, our professions, our family, the things that we love, our cars, our things of possession. What are they in reality? They are basically clay, mud and clay and water. So why would we give up Allah subhanahu wa ta'ala for these petty things? What will our heart do by engaging with these things? These are all mud and clay and water. And when every single day we are called by Allah subhanahu wa ta'ala, we are the call, our destination calls us, which is also death. That it comes and calls us, and it comes close to us and calls us by showing Allah subhanahu wa ta'ala, showing to us the Allah subhanahu wa ta'ala. Rozo shab jab pukare hai manzil, paas aakar sanam gar dikha kar. He is the one who has created everything, but this is all deception. So you better look at the one who has made everything, who has given you everything, and who is the real reality. The last one inshallah.
जी की चाहत कफस से छुड़ा कर आस के बाजुओं में उड़ा कर. So it is our deep seated, deep rooted wish that we finally be able to see and communicate with Allah subhanahu wa ta'ala directly. It is mentioned that when we talked with Allah subhanahu wa ta'ala, and when Allah subhanahu wa ta'ala asked us, am I not your Lord? Two things happened. One was that we saw Allah subhanahu wa ta'ala, and the other was that Allah subhanahu wa ta'ala talked with us. So all our search for beauty is because we have seen Allah subhanahu wa ta'ala. All our search for good things, things that are beautiful, that is because we have seen Allah subhanahu wa ta'ala and we are looking for that. We are searching, we are lost and we are searching for that. And because Allah subhanahu wa ta'ala talked with us, because of that communication that we had, our search for ilm, our search for knowledge, our search for clues and getting to know more, that has started. So all of that is hidden within us, and that is our deep-seated wish that we finally be able to see Allah subhanahu wa ta'ala, but we are in a prison cell. We are in a prison cell. The Prophet ﷺ has said that this dunya is a prison cell for a mu'min. And it's a Jannah, it's a paradise for kafir. For a believer, it's a prison cell. But for somebody who does not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, it's paradise. You do what you want to do. But for a believer, we cannot see Allah subhanahu wa ta'ala, so we've been entrapped in this. And we are waiting for that day when we will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. So, जी की चाहत कफस से छुड़ा कर आस के बाजुओं में उड़ा कर. As is hope. The Prophet ﷺ has told us that the affair of Allah subhanahu wa ta'ala with every slave is according to their wish, according to their hope, what they hope with Allah subhanahu wa ta'ala. So we have hope that we'll be able to see Allah subhanahu wa ta'ala, and that is our weapon. That will free us of this entrapment, inshallah, one day. Aas ke bazuon mein udakar, our wish will one day it will fly on the wings of our hope. एक दिन सारे बंधन तोड़ाकर, एक दिन सारे बंधन तोड़ाकर, एक दिन सारे बंधन तोड़ाकर तुमको देखेंगे नजरें उठाकर. एक दिन सारे बंधन तोड़ाकर तुमको देखेंगे नजरें उठाकर. So in all of his life, we are seeing Allah subhanahu wa ta'ala by lowering our heart, lowering our gaze, looking towards in our heart, searching in our heart. On the day of judgment, in the hereafter, in the Jannah, the Prophet ﷺ has said that you will all be able to see your Allah like you look at the moon. You look up, and you are able. Each one of you is able to very comfortably see the moon. So just like that, you will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. So all these traps, all these things that are holding us back, they will be taken away, inshallah. And in the paradise, our dearest wish will come true. We will see Allah subhanahu wa ta'ala. जी की चाहत कफस से छुड़ा कर आस के बाजुओं में उड़ा कर, एक दिन सारे बंधन तोड़ा कर उनको देखेंगे नजरें उठा कर. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us His ma'rifah, His love, His realization. Amin ya Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. أنت ولينا، أنت ربنا. يا الله يا الله يا Allah, you are our Lord. Ya Allah, you are our caretaker. Ya Allah, we are fully dependent on you. Ya Allah, Ya Allah, we beseech you. Ya Allah, we beg you. Ya Allah, we implore you. Ya Allah, do not deprive us of that connection that you have granted us with you. Ya Allah, Ya Allah, make us work on that connection. Ya Allah, make us those who polish that connection. Ya Allah, make this connection our survival. Ya Allah, Ya Allah, make it our thing to live by. Ya Allah, make it our energy to live by. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, keep on strengthening it. Ya Allah, keep on improving it. Ya Allah, Ya Allah, even when we are being, Ya Allah, lazy, and when we are being stupid, and Ya Allah, when we are turning away
And Ya Allah, when we are not doing what we're supposed to do, Ya Allah, and when we are being negligent, Ya Allah, Ya Allah, we are asking you now, Ya Allah. Ya Allah, we are sitting before you, Ya Allah. We have our hands raised, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Whenever we are being stupid, Ya Allah, Ya Allah, you do not give it any importance, Ya Allah. Ya Allah, you still connect us with you, Ya Allah. You still pull us with you, Ya Allah. Ya Allah, you are the one who's the real puller, Ya Allah. Ya Allah, there's nobody who can, Ya Allah, go to you and reach to you, Ya Allah, with their own energy, Ya Allah. Ya Allah, unless you pull them, Ya Allah. Ya Allah, you pull us towards you, Ya Allah. Ya Allah, you keep us, Ya Allah, make us stay attached to you, Ya Allah. Ya Allah, never ever, Ya Allah, push us away, Ya Allah. Never ever make us mardudeen, Ya Allah. Ya Allah, grant us love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this world. Ya Allah, grant us nearness to him, physical and spiritual, in this world, Ya Allah, in the hereafter, at the time of death as well, Ya Allah, in the Jannah, Ya Allah, and when we see you, Ya Allah. Ya Allah, only with your karam, only, Ya Allah, with your blessing and mercy, Ya Allah, fulfill all what we have asked, Ya Allah. Ya Allah, protect us from disobedience. Every single second that we disobey you, Ya Allah, we run away from you, Ya Allah. Ya Allah, it is the worst moment of our life, Ya Allah. Ya Allah, the most unfortunate moment of our life, Ya Allah. Ya Allah, always protect us from such events and such times. Ameen Ya Rabbil Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, also grant us our wishes of this world, the purposes, the goals that we are going after. Ya Allah, make them easy. Ya Allah, give them, Ya Allah, make them, Ya Allah, full of blessing and plenty. Ameen Ya Rabbil Alameen. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Everyone is invited to